Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2371-7106 and 2371-7117. Listeners calling from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Key domestic share markets decline more than 1%. Sensex closes near the 56,800 levels. Nifty settles below the 16,900 mark. Rupee weakens to 81 rupees and 87 paisa against the US dollar and Brent crude price rise to trade above $88 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 56,800 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 16,900 के स्तर से नीचे आया। रुपया कमजोर होकर 81 रुपए 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $88.55 प्रति बैरल के आसपास रहीं। सबसे पहले बात शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों के कमजोर प्रदर्शन का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स 56,800 के स्तर के करीब जबकि निफ्टी 16,900 के स्तर से नीचे बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.11% के नुकसान से 638 अंक लुढ़क कर 56,788 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 207 अंक टूट गया और 1.21% के नुकसान से 16,887 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% गिरावट के साथ बंद हुए। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 1%. Both indices slipped as cues from global share markets were negative. The Sensex closed near the 56,800 level, while the Nifty settled below the 16,900 mark. The Sensex lost 638 points or 1.11% to close at 56,788. The Nifty slipped 207 points or 1.2% to close at 16,887. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 1.25% and the small-cap index declined 0.5%. In the Sensex pack, 4 companies posted gains while 26 logged losses. Dr. Reddy's gained 2%, Bharti Airtel climbed 0.5% and NTPC surged 0.4% each. On the other hand, Maruti tumbled 3.2%, Hindustan Unilever plunged 2.8%, IndusInd Bank declined 2.5%. In sectoral indices at BSE, 2 sectors gained while 17 logged losses. The industrial sector gained 0.8% and the utility sector surged 0.4%. On the other side, power sector lost 3.2%, FMCG declined 2.1% and commodities sector plunged 2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,356 companies gained while 2,194 fell. Shares of 154 companies remained unchanged. And before we move on, let me repeat the numbers on which you can call us today. The numbers are 2371-7106 and 2331-4444.
Harveer ji, your first comments on the way the markets behaved today, because on Friday we saw that was a 2% rally. I mean, the markets closed more. I mean, Sensex closed over 1,000 points, but today we are seeing more than 1% fall. What are the reasons? Actually, what was the weekend movement of the markets in big global stock exchanges? We have seen this is the reflection of that, and we have seen that the way Fed is taking decision, European Central Banks taking decision, and the yield for bonds are going up there, as well as interest rates. So that capital is flowing back to these countries from emerging economies. We are seeing continuously that foreign institutional investors are selling, and one good thing is that domestic institutions are buying. Basically, they are keeping the market, giving basically more support to the market than individual investors or other this thing. So they may be seeing that DIs are saying that there is an opportunity to buy, but FIs are continuously selling. So at the same time, we have seen the RBI also raised interest rate, but everybody said that already market discounted that 0.5% of policy rate increase. At the same time, RBI is continuously keeping the stance to control the inflation, because it is not in the range of RBI's tolerant level of 4% plus minus 2%. Maybe in the first quarter of the next fiscal, RBI thinks that it will come down below 6%. But still there are some concern. The reason is that food inflation is not basically under control. We are seeing some price increase in some commodities. We have seen some relief also, particularly on edible oil side, because globally oil prices are going down. So, and there is a reflection. But when we see at the same time, you see the energy prices are also going up, particularly natural gas. It will have an implication. So, and the number of PMI is also not encouraging. It has come down from the previous month. So all these factors, I think, is throwing market on this negative side. The market is decelerating. जी, बाजार की चाल पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अतानु साहा कोलकाता से। जी अतानु साहा जी, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। हाँ, नमस्कार। I, Atanu from Kolkata. Good evening, sir. My related question, how does rising interest rates control inflation? How does rising interest rates control inflation? And the second one, how are key indicators? What are the key indicators go through understanding the time frame of rising interest by central banks, sir? Sir, I wish to know the time frame. We are realize it maybe something is due to certain central bank rising interest. So I wish to know that the time frame. Somebody that is 2023 or it is already started, and when if it is already started, so how long it will continue? Our central government, that means Reserve Bank, Indian, even matter of US, how long it will continue, sir? This is my question, sir. Thank you. Have a good day. Actually, the first question was about inflation. Ji. And how inflation can be controlled by tightening the money supply. So basically these are fundamental theories and principles of economics. When you tighten the supply of money, inflation comes under control or prices goes down because there is less demand. Because demand is chasing a particular commodity or a product is the main reason for increasing the prices. So, but sometimes even demand is not too much, and despite that prices goes up. But due to this, particularly this, the question was related to how this tightening of money supply. Basically,
central banks thinks, and it is a formula that if there is less money into the hand, so there will be less demand for the product, so prices will get under control. That is the and sometimes it is not necessary that it applies or gives the desired result always. But since we read economic theories and principles since last 300 years or so, it talks about this elasticity of price and demand, but formula is like that. Yeah, and we've been seeing this. Sorry, please. Yeah, and another question is saying that how long? It's not. When RBI or any central bank decides that the policy rate, particularly policy rate, or the rates central bank decides for repo and reverse repo, or some special facility when liquidity comes from central bank to the system or to banks borrow or banks deposits. These are the basically rates for repo and reverse repo. So banks keeps this balance. And whenever banks announce, central bank, it announce immediately that from today onward the prices, or from tomorrow onward that this new rates will be applicable. Maybe it takes some time to get reflected into the retail loans or the interest rate by the banks. Sometimes banks immediately apply that. So because as a common man or borrower or depositor, we get directly affected when we transact with the bank. Because we don't transact with the central bank. Banks transact with central bank. So it is like that. So there is no time frame that how long, because the objective of the central bank is always to keep growth momentum continue, and if there is unnecessary price increase, to control the price. That's why we say that there is a range, 4% plus minus 2% of the inflation, the acceptable level for RBI, which RBI has promised to the even Parliament and government that we will keep it here. It is a mandate for RBI to keep the price inflation around this level. And now we have the next listener online, who's from Delhi, Pankaj. Pankaj, welcome to the program. Please ask your question. Sir. हेलो जी सवाल पूछिए. हाँ सर, आपका आई एम लिसनर फॉर 3-4 years. हेलो जी. माय रिक्वेस्ट इज दैट डोंट रिपीट, मतलब टू द ऑडियंस दैट डोंट रिपीट द टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस. एंड सेकंड वन, transmission of cases in which they are inheriting from their fathers or grandfather. It should be one window from the SEBI. And second question is that I have seen one share which is in market at the rate of 250 or like that 207, and their all data is in zero. So what type of SEBI is controlling? Is there any control of that? Means they are cheating the this retailers or like that. These are two questions. One is for the inheritance of share. It is very difficult because brokers and touts are charging 60%, 70%. Even they are saying they have access to the SEBI and IEPF. That is like that. And I have dealt with IEPF for 7 years in my office portfolio. Right. Mr. Singh. No, actually you're right that any inheritance must be smooth and very short process when you provide all kind of legal documents and follow the process. Maybe your advice may be well taken by SEBI to think about it. When you talk about the price of a stock, particular stock, you can complain direct to SEBI because prices of stocks get reflected through the stock exchanges at which price stocks are being traded, or whether it is the NSE or BSE, and it gets recorded, it gets documented. So it cannot be that if the prices of stocks are get documented a particular price on stock exchanges, and the prices reflects differently. Maybe some technical error, and if it is intentionally, you can complain to the SEBI on that, because there are millions of investors are basically transacting this thing, and I think regulator is very strict on all these issues. We have seen in recent past the action taken by the regulator against markets. जी, गाजियाबाद से गौरव फोन लाइन पर हैं. हेलो.
नमस्ते और मंत्रा टीम, गुड इवनिंग जी। नमस्ते, सवाल पूछिए अपना गौरव जी। हरवीर जी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, बताइए हमारे ये दो देश लड़ रहे हैं आपस में, रशिया और यूक्रेन जी, उससे विश्व का जो ग्रेन मार्केट है, जो अनाज का मार्केट है, वो क्या है, अब क्या इस परिवेश में क्या इफेक्ट आएगा? क्या हमारे किसानों को ज्यादा अच्छे रेट मिल पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट से, या वो इनको ज्यादा फायदा नहीं होगा? आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या दृश्य देखते हैं? और दूसरा सर छोटा सा सवाल और है, नहर के बजाय अगर एक पाइपलाइन लगाए पानी के लिए तो क्या एनवायरमेंट का डैमेज कम होगा? क्योंकि नहर और डैम से एनवायरमेंट डैमेज होते हैं, और मैंने देखा है कि पाइपलाइन से ऐसा सुना है कि डैमेजेस कम होंगे। पाइपलाइन क्या बेटर होंगी? इरिगेशन हमारे देश में अभी भी बहुत कम है। इन दोनों सवाल का जवाब दी। थैंक यू। देखिए, दोनों देश जो रशिया और यूक्रेन है, जो दुनिया का खाद्यान्न बाजार है उसमें बहुत बड़ा हिस्सेदारी उनकी है। करीब गेहूं में 25% के करीब ये दोनों हिस्सेदारी रखते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, और उसके अलावा जो एडिबल ऑयल है उसमें भी बड़ी हिस्सेदारी है, खासतौर से सनफ्लावर ऑयल में। ये ग्रेन है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में रशिया और बेलारूस का बहुत बड़ा रोल है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, खासतौर से जो डीएपी वगैरह होता है इसमें, और पोटाश में। तो ये एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करते हैं और मार्केट में प्राइसेस को भी। जब ये वॉर शुरू होता है, और पहले जब ये आपका फरवरी में, उसके बाद अचानक वीट प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी काफी हुआ। लास्ट फिस्कल में हम लोगों ने 7 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा क्रॉप का कुछ इश्यू था बाद में, और हमने एक्सपोर्ट तेजी से किया, बट फिर मई में हमने एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया था। बाद में जो वीट प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी बैन किया था। साथ में ये भी है कि जो दूसरे देश हैं वहां से थोड़ा सप्लाई बढ़ी है, और ग्लोबल मार्केट में वीट के प्राइसेस काफी सोफन अप हुई हैं, और एक एग्रीमेंट हुआ था, यूएन टर्की ने मिलकर रशिया और यूक्रेन के बीच में एग्रीमेंट कराया था, जिससे कि वहां पे जो नई क्रॉप आई थी उसका काफी बड़ी मात्रा में शिप आउट हो पाया ग्रेन। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल फूड ग्रेन मार्केट की सप्लाई और प्राइसेस के ऊपर गया। दूसरे ये है कि क्योंकि अभी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है राइस में हम लोग काफी ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया था, और दुनिया का 40% मार्केट तक हम लोगों ने ले लिया था। करीब 20 मिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट हमने राइस का किया था लास्ट फिस्कल में। बट अभी थोड़ा, एक तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, गवर्नमेंट के जो सेंट्रल पूल में स्टॉक्स हैं उनका यूज बड़े पैमाने पर हो रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ्री में ग्रेन के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक कॉशियस अप्रोच लिया, और जो राइस के एक्सपोर्ट में जो खासतौर से नॉन बासमती है उसमें 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, और ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन किया है। बिकॉज गवर्नमेंट का पहला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल रहें। तो ये सिनेरियो है अभी ग्रेन का। जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्राइसेस बेहतर हुई हैं मार्केट में भी, और उसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिला। पूरे सीजन में गेहूं के जो किसान हैं उनको एमएसपी से ज्यादा दाम मिला बड़े पैमाने पर, और राइस का प्राइसेस भी फार्मर्स के लिए ठीक है अभी। और इनका दूसरा सवाल, इरिगेशन थ्रू पाइपलाइंस। दूसरा देखिए, ये तो समय के साथ चलता है। जब हम लोगों ने डैम्स बनाए और इरिगेशन चैनल्स पिछले 200 साल में तैयार किए और बड़े हिस्से को देश के इरिगेट किया, उस वक्त जो रिसोर्सेज थे और जो टेक्नोलॉजी थी उसका नेचुरल फ्लो जो है पानी का, उसका यूज करते हुए किया। पाइपलाइन इज वेरी कॉस्टली अफेयर, और हमें देखना चाहिए कि जो ये कैनाल इरिगेशन होता है उसको आगे आपको ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बोलते हैं, उसके आगे और छोटे चैनल होते हैं, और जो पर्टिकुलर जो एक प्लॉट होता है फार्मर का, जो खेत होता है, वहां पर सबसे छोटा चैनल जाता है फिर। सो इसकी मैपिंग होती है एक बड़े इलाके की, लाखों हेक्टेयर की मैपिंग होती है कि लास्ट माइल तक कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर हम पाइपलाइन बिछाने लगेंगे इसमें तो ये आई थिंक ये काफी महंगा प्रीपोजिशन हो जाएगा। साथ में जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप जो बंद बनाते हैं कैनाल्स के मिट्टी से, और या फिर सीमेंटेड भी थोड़ा बनाए, इट टेक्स लेस टाइम। तो वैसे भी अभी तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, अभी तो माइक्रो इरिगेशन है या वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, तो और पानी बचाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है, या स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हो रहा है, रिड्यूस
वाटर रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत ही थोड़ा 10वां हिस्सा कर देती है, उससे भी कम। तो ये चीजें इसको लेकर के मैं कहना चाहूंगा। And the next caller is Kundan Singh from Delhi. But before we take his call, let's have a look at how the rupee behaved from Vishal. जी, रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 53 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.22% बढ़कर 112.36 पर चल रहा था। And now let us take the call from Mr. Kundan Singh from Delhi. Mr. Singh, welcome to the program. Please ask your question. Yes, hello. जी, सवाल पूछे कुंदन जी अपना। This is Kundan Singh. Actually, I want to ask that how any organization split their share price, and what is the criteria? Okay. Like 1:2 or 1:2:3. How they decide? He wants to know how a company fixes the share prices and what is the criteria. Basically, you see, when there is a company is not public, it is a private company. A company wants to become public. So they decide what is the percentage of the equity they will dilute through market, through initial public offer. So, and then earlier there was a formula based on the profit and P ratio, but few years back, SEBI allowed the companies to fix the price band. So companies fix a price band based on their value of whatever the calculation they make, companies assessment of their revenue and expenditure or earnings and the growth prospects. It gives a price band, and now it is known that based on the price band, investors basically bid for the stocks in a certain lots of stocks as company decides that you can buy in 10 or 100 or 25, whatever is there. So then in which band the price investors basically bids, so then final price comes out accordingly. जी, ठाणे महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो गिरावट सर ये जो देखी जा रही है लगातार, तो ये सर मतलब क्या इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उसके जो मुख्य कारण है, या हमारे देश में तो ऐसा मतलब इकोनॉमिकली कोई बड़ा क्राइसिस तो हुआ नहीं है, तो सर ये मतलब ये अभी 60 के ऊपर दिख रहा था जाता हुआ, तो ये अभी कितना नीचे आ सकता है और आगे भी क्राइसिस अपना ये जो गिरावट देखी जाएगी? और इसमें जो है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर या ये जो FIs या इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग ज्यादातर बाहर हो रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए, आपने ठीक कहा है कि हमारे फंडामेंटल्स तो वैसे नहीं है कि हम क्राइसिस के रूप में देखें, और ये माना भी जा रहा है कि एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि जो अभी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उनको लेकर के जो धारणाएं बन रही हैं उसमें भी स्टैंड्स आउट। हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी उससे उस तरीके से प्रभावित नहीं है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है। एक तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए या बाकी प्रोडक्ट्स के लिए देयर इज ए डिमांड, सो एंड इट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। वी आर सीइंग कि ग्रोथ हमें दिख रहा है सेक्टर वाइज, तो इसलिए बट जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं उसको दुनिया का जो घटनाक्रम है खासतौर से कैपिटल मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में, उससे अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग एक ओपन इकोनॉमी है। हमारे यहाँ दुनिया भर से लोग आकर के स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस, जो इन्वेस्टर्स हैं। तो उसमें पिछले दिनों ये ग्लोबल जो सिनेरियो बदला है उसमें काफी सारा पैसा निकल करके अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसमें गया है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनमें भी प्रॉब्लम है अमेरिका को छोड़ के, अगर आप देखें तो। सो उसका क्योंकि उनको जहां ज्यादा कमाई होगी वहां जाएंगे, तो इसलिए FIs ने सेलिंग की। बट ये भी सही है कि इसी दौर में हमारे जो भारतीय जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने खरीदारी की और उन्होंने मार्केट को एक बड़ा सहारा दिया है। सो जहां तक आप कह रहे हैं कि 60 की तरफ 60 क्रॉस करने का, ये तो देखिए मार्केट में ये काफी सेंटिमेंट्स का खेल होता है। मार्केट इज नॉट
कंप्लीटली एक कोई सेट फॉर्मूला नहीं है फंडामेंटल्स के साथ, कई बार उसका बहुत उतना एक रिलेशन भी नहीं होता, तो इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि कहा जाएगा। बट यह है कि हाँ, थोड़ा सा जो इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उनको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जी, दिल्ली से योगेंद्र जो हैं फोन लाइन पर, सवाल पूछिए अपना। योगेंद्र जी, हेलो। जी, लगता है उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट रही, हालांकि जापान के शेयर बाजारों में मजबूती रही। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% टूट गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.6% के नुकसान में रहा, लेकिन जापान के निकेई में 1.1% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया और चीन के शेयर बाजारों में अवकाश के कारण आज कारोबार नहीं हुआ। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख था। जर्मनी का डेक्स 0.1%, फ्रांस का कैक और लंदन का FTSE 100 दोनों 0.4% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। भिलाई से रवि नारायण फोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। मार्केट मंत्रा को नमस्कार और हरविद जी को भी मेरा नमस्कार जी। अभी एक आरबीआई के मनी सप्लाई और उसके कंट्रोल के रेफरेंस में अरबी साहब ने कहा कि ये 300 साल से जो है मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई और उसका जो थ्योरी है वो उसी पे चल रहे हैं हम जो है। वहां तक तो ठीक है, थ्योरी है और उसका असर भी होता है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें कहीं कुछ हमने या हमारे देश के रेफरेंस में हमने इसके बारे में कुछ सोचा है कि कोई और भी मेजर्स हम कर सकते हैं क्या, ताकि और इफेक्टिव रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो WPI और जो अपना जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको निर्धारित करने के जो फार्मूले हैं उसमें भी क्या समय समय पर उसका रिव्यू किया जाता है क्या? हाँ, देखिए, दो चीजें हैं। ये जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो सेंट्रल बैंक का काम है, लेकिन जो सप्लाई साइड है उसको सरकारें देखती है कि अगर किसी चीज का आपको उत्पादन बढ़ाना है या आयात करना है, ड्यूटी स्ट्रक्चर बदलना है या कोई और इंटरवेंट करना है आपको सप्लाई साइड इंप्रूव करने के लिए, और ये आरबीआई भी इस बात को बोलता है। तो ये बेसिकली ये जॉइंट एफर्ट होता है सरकार का और सेंट्रल बैंक का। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि WPI और CPI बिल्कुल होता है। एक तो बेस ईयर बदलता रहता है और साथ में जो उसका बास्केट है WPI का, CPI का, उसका भी रिव्यू होता है। बट ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। समटाइम इट टेक्स 10 ईयर, समटाइम 5 ईयर। तो ये इस तरीके से होता है। जैसे अभी बात हो रही है कि क्या सर्विसेज को भी शामिल किया जाए उसमें, इंडेक्स में, तो वो, और ये क्योंकि बड़े इकोनॉमिक डिसीजन और पॉलिसी इश्यूज होते हैं और इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर बैठ करके लंबी चर्चाएं और जो डाटा होता है उसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर कॉल लेते हैं। बट ये होता है। Moving on, oil prices jumped around 4% today as OPEC Plus considered cutting output by more than 1 million barrels a day for its biggest reduction since the COVID-19 pandemic in a bid to support the market. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.55 per barrel, while WTI crude prices were at $82.96 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 36 रुपए की तेजी से 50,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। समाचार लिखे जाने तक दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1,291 रुपए की मजबूती से 58,149 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,674.20 प्रति औंस पर था। चांदी भी तेजी के साथ $19.44 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। And our listener Yoginder was online, but we could not take his call today because of lack of time. That's all we have time for today. Thank you so much, Mr. Singh, for coming to the studio and answering our listeners' queries. Thank you. And before we close, look at the headlines. Key domestic share markets decline more than 1%. Sensex closes near 56,800 level. Nifty settles below the 16,900 mark. Rupee weakens to 81 rupees and 87 paise against the US dollar. And Brent crude prices rise to trade over $88 per barrel. And that's all in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Namaskar.